This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Am I audible to all? So, before starting today's session, I just want to ask you, whatever been covered in last two classes, have you gone through those things and have you practiced it? Have you coded it, means each and everything, whatever been covered till yesterday? I want an honest reply. So please, whatever is your status, do share it with me. Have you practiced it? Have you tried it? Oh, Hello. हेलो यस मैम यस Yes. मैम कल Yeah. थी फायरफॉक्स का जो टूल से था ना ऑटोमेटिक जो कनेक्शन हो रहा था वो मेरा हो चुका था और यूजर अच्छा. आईडी वगैरह कोडिंग वगैरह था वो हम कल किए थे ओके. सो आपका काम कर रहे हैं ना अभी? हाँ यस मैम कल जितना भी तक किए वो. हाँ वो सब काम कर फायरफॉक्स से अच्छा. हो रहा है Okay. Okay. Fine. Fine. Okay. So what about the rest students? Have you done it? Is it working for you? See, repeatedly I'm saying you to keep yourself up to date, because once you miss these classes or once you do not practice it by yourself, it will be very difficult for you to complete up your project. So that's why I'm repeatedly sharing with you the codes whichever been done over here, the daily basis recording, everything is being shared with you. So do practice it. Until and unless you practice it, you do it by yourself, you cannot grip the thing. And you cannot understand by observing the video or by attending the lecture, you cannot understand the entire thing. So it seems that yeah, it's very easy, बहुत easy है, जब करेंगे तो एक चुटकी में एक बार में हो जाएगा, but it's not like that. कभी कभी बहुत सारा मीन्स ऐसा एरर आ जाते हैं जो कि कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं सॉल्व करना. मीन्स हाँ, if you know the tricks and tactics to solve the errors, definitely you can easily solve it. Otherwise बहुत मुश्किल हो जाते हैं. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं डेली बेसिस जितना भी कवर हो रहे तुम लोग ट्राई करो. अगर कोई डाउट है तो कम अप with your doubts. Until and unless you share with your doubts, I cannot help you out to come to overcome your difficulty. So that's why I'm saying repeatedly, come up with your doubts, practice daily, whatever been done, how much been done, so that we can progress means well in advance. Okay, so without wasting any more time, what about the rest? Means I am seeing finding it's too less attendance for today. Okay, so let's start the sessions. Yesterday I have shown you how you can put your relevant data in the header portion of your drawer.
I have shown you how you can access your header portion and how to put the data in the header portion. This one I have covered yesterday. This much I have covered yesterday. So today I'm going to complete the another part of this basically, which is basically your profile section. If you remember, in our drawer navigation, let's show you the layout once again. So as you can find it out, the home screen is appearing, some extra screen is there, and the profile screen is there. So I have shown you how yesterday that how you can use for the logout, how to operate for the logout of the session, all those things. Today I'm going to show you how you can update your profile, how you can fetch your data, and you can update your profile. So that I'm going to show you today. So for that, already, if you remember, we had a fragment profile.xml file where I have designed the screen in something this sort of manner. Let's do one thing. How much is the text size? 30. Make it 30. Less it appears. And let me change the background color. Background change. Color. Black, letting black, so that it has been highlighted to the user, or I can put it gray also, whatever. For now let me do it as black, and this one is already there, and against this we have a profile fragment which is extending a fragment over here. Now, in this profile fragment, so far we have seen how we can fetch the data from camera using camera or using gallery, and how to put that particular image in the image view. We have covered that part. Now, apart from that, what we have the rest? We have this section. We have the section to show the text, the username. We have the section to show the email ID, the phone number, the some extra information, something like that. Now, so for that, what I would like to do, I will like to, since these are all edit text, I want first of all to create the variable for those. So I'm creating edit text type variable, edit user, edit name, I'm writing edit email, then edit next phone is there, next edit what extra was there, so edit extra. So this thing, I hope this 4 are there only. I guess let's check it out. 1, 2, 3. Now, how come I'm writing 4? Email, phone, 1, 2, 3, 4. Email, phone. Acha, extra one is not been shown. Yeah, due to the scrollable feature, so it was not been shown. So yeah, it's okay. 4, total 4. Edit text is there. So let's map it one after another.
edit email equals to, since it's a fragment, that's why root dot find view by id, then mentioning the id over here. I hope it's profile email if I'm not wrong. Let me check it out. Yeah, profile email, profile contact, profile extra, and this one is profile name. So edit name equals to root find view by id, profile name. I'm just copying it and pasting twice again. I'll just rename it to phone and this to extra. Similarly, I have to change it over here, extra, and this one profile contact. So in this way, the mapping, all the mappings against the variable is being done. One more thing that I have is that another floating action button, I have it over here, which will allow us to save the entire data. So this one I'm going to use. So that's why black color is not looking good. Let me change it to some light. Let it be like this, at least so that user can understand. Yeah, there's some icon. Okay, so for that I'll be using tab save. Now I need to use this also, what is profile save. So let me add it over here. Equals to root dot find view by id dot save. So I've done with it. Now what we need to do, first of all, whatever the data is there against the profile, I need to store all the data. So for that, since we have maintaining the profile of a user in our real-time database, that's why I'll create a private variable of real-time fire database reference ref equals to firebase database dot get instance dot get reference. So accessing the exact reference, access exact reference.
Now, using this ref variable, what I want to do, I want to initialize the my particular child. So for that, initialize. Okay, I hope I have initialized over here. Let me do one thing. Copy. Paste. So instead of doing over here, I'm using over here. Let me remove the private from here. And then I will load each and every data. Load all means entire profile info I need to load. I need to show. So for that, I'm creating a separate method so that this particular method doesn't becomes too clumsy and too lengthy for us to understand. So I'm using this method to show all, means to fetch and show all data when the screen is loaded. So for that, I'm using a method. Within this, I'm going to write the code to fetch and show data. So how to fetch the data? Very similar way, the exact way we did over here. This particular way only we want to do, we need to do. So for that, we need to use the user ID. So what I'll do, I'll create over here the local session. Session. Now I will initialize over here. Session equals to new local session get context. Why get context? Why not the class file dot this? Because over here I'm using a fragment, not an activity. Since I'm using a fragment, not an activity, that's why I'm mentioning over here the current working context. Next, after mentioning the current working context, then we can get the data of the user ID, that is, so string user ID. So I'm fetching over here the user ID, retrieving the user ID. So over here I'm going to write user ID equals to session dot get info. Now constant dot UID. So I have got the UID so that I can use it over here. Now the exact code that I have written over here, I'm just copying the same thing here again to get the data. Now instead over here, instead of header email and header name, it will be edit email and it will be edit name. What else I have? I have a status. So I'll use account.set status map dot get status, and I will set that also. Extra I have, yeah, set text account dot get status. That's it. I don't have phone number, so I don't have anything to put in the place of phone number field at the moment. That's why I'm just leaving it.
drawer fragment, it will be get text anymore. So that's it. So it's been done. So let's check first of all whether I'm getting the exact data, I'm getting the data or not, which I'm fetching from my user account. If I'll get the data, then I can proceed for the update the profile section. So let's connect my phone and check for it. So let me execute the code. Yeah, hello, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so fine, let me go to the profile section. So first of all, it's showing as username, email ID, this one, but later on, as you people can see, this thing have been shown. Since I have given the value as P and the email ID and the extra information as professional, hence the status, since there is no phone number, so phone number is not been visible. So since phone number is not been visible, we want to provide some phone number or something like that, we can give a default number like 0 or something like that. So that means the section is getting updated up, but the text are very big to show, so I will just like to minimize size of the text for each of the cases. So it's 24, let me decrease to 18 in all the cases.
18 and here to 18. And for the phone number, let me put a, oh sorry, I have given text instead of hint. I should provide hint over here. Okay, same hint here again, and here again hint. Oh, nothing else, I guess. So let me execute it once again. One thing in between I just want to show. Okay, it's been ready. So file section, and it's okay now. So it's showing as value as P, and if we can check it out, it's showing as professional. And unlike in last cases, phone number is showing as hint. And moreover, as soon as I will type something, okay, one thing, the screen is not moving up, so it's like actually getting hidden out. So what I will do, what I will prefer to do over here, I'll prefer adding a scroll view to the entire thing so that it appears correctly in the manner in which I want to. So I will apply the scroll view over here, scroll view, and within that I will apply the relative layout, match parent, tag content. The closing will be at the last. Yeah, it's now it's okay. Okay, so but this button is getting hidden out. So check it out again. And the card. I didn't no. So let me provide a name to the card. So ID end of present booking. It's not appearing. Okay, let me keep it as parent bottom only. Parent and parent sections. As it was earlier, I'm keeping like that. I hope it will come in the section. Let me execute it once again.
If I move to the profile section, actually this portion is getting hidden up. And this one. Okay, the problem got resolved that if I click somewhere over here, it is getting waved up, means the keyboard is getting waved up. This problem got resolved, but the button has not been aligned. Let me align this button correctly. We design for this one. And let me do one thing. If I use linear layout instead of this linear orientation vertical, I do orientation vertical, so gravity center for all coming. It's fine. Let me do one thing. Align layout gravity, and yeah, it's okay now. It's perfectly fine. Now it's appearing correct. So let's check it out. Stop and then execute it afresh. See, sometimes we use some layout, but due to some designing features or something, we need to change the layout so that we get the exact design the way we want to. So it's all about the perspectives, it's all about the thinking. जैसे तुम लोग सोच रहे हो वैसे डिजाइन करना चाहो तो जो लेआउट जैसे तुम लोग को पसंद है उसको वैसे यूज करो, कोई हार्म नहीं है. So my thing is appearing all right, the button is appearing all right, it's clickable also. Means now since I don't have any event against this, that's why you cannot understand. ये scrolling भी हो रहा है. This portion is also getting scrolled if you check it out. ये portion भी scroll हो रहा है, I guess. Okay, there's some issue over here. Check it out. Problem scroll. Next sketch. Okay, if I don't use this scrolling video, if I directly use it, scrolling रखना नहीं है. This if I want to इसको slightly increase कर देते हैं to wrap content. आइए ये फिलहाल ठीक हो जाएगा. 16 here 16 again. So let's stop it and rebuild it afresh.
Yeah, now it's okay. Now it's perfectly all right. Each and every field is visible clearly. अभी तक fetch नहीं हुआ है. हाँ, तुरंत जब fetch हो गया है डेटा, सो पूरा सारा डेटा जितना भी अभी फिलहाल है, अभी फिलहाल हम लोग 3 डेटा सेव कर रहे हैं, द नेम, द ईमेल आईडी एंड द एक्स्ट्रा डेटा दैट इज द स्टेटस ऑफ द यूजर. वो चीज हम सेव कर रहे हैं. नाउ अब हम इवेंट लगाएंगे जे अगर हम गैलरी से कोई इमेज फेच करे या कुछ करे, सो हाउ दैट कैन how that can help us. So something we are going to do, we are going to have some data over here. So let's choose a value, some picture or something. Let's choose some picture, some image, something like this. Okay, so as you can find out, the image is appearing. Now I want to save the image. Now we want to do the thing to save the image. How we can save this image, how we to the server. That means basically how we can update our profile as a whole. Even now, if I want to add some phone number also, if I want to add some phone number, how that number also gets saved against this button, this particular button, that we are going to do. Am I clear so far? Any query so far? मैम जो ये लेआउट है, कॉन्सेप्ट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ये जो है, तो ये कौन सा लेआउट कहाँ पे लगाना होता है? तीनों में डिफरेंस? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये लेआउट इधर ही लगाना है. हर एक लेआउट का अपना एक फ्लेक्सिबिलिटी है. तो आपको जो लेआउट आप जहाँ यूज करना पसंद करेंगे वो आप यूज कर सकते हैं. उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाँ, अगर नेटिव लेआउट बोला जाए तो एकदम स्टार्टिंग जब एंड्रॉयड आया था तब लिनियर लेआउट, फिर रिलेटिव लेआउट, ऐसे करके ग्रेजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट इंक्लूड किया गया है ताकि डिजाइन में इजीनेस आए. यूजर कैन यूज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग. क्योंकि आप देख ही पा रहे हो, कुछ चीज हम सेंटर कर रहे हैं, कुछ चीज हम डिफॉल्ट पोजीशन में रख रहे हैं, कुछ चीज हम फोर्सफुली राइट लेफ्ट ऐसे करके हर एक चीज को मीन्स मैनेज कर रहे हैं. सो सिंस मेरा मीन्स एज अ होल हर एक आइटम मेरे को लिनियरली मीन्स वन आफ्टर अनदर पुट करना था, तो क्या किए, इसीलिए हम लिनियर यूज किए डायरेक्टली, ताकि मीन्स ऑटोमेटिकली एक के बाद एक अरेंज हो जाए. मेरे को बताना नहीं पड़े कि हाँ यू नीड टू प्लेस ओवर हियर, यू नीड टू प्लेस ओवर देयर. जैसे जैसे हम डिजाइन करते जाएंगे इसके अंदर उस हिसाब से एक के बाद एक पुट हो जाएगा. बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर आई मीन रिगार्ड करें कि मेरे को एक इमेज, सर्कुलर इमेज चाहिए एंड उसके साथ मेरे को एक एडिट ऑप्शन चाहिए, और एडिट ऑप्शन हम प्लेस करना चाहते हैं इधर, तो रिलेटिव लिनियर लेआउट में क्या ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, बट रिलेटिव लेआउट अगर यूज करेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आएगा. तो इसीलिए क्या किए, हम रिलेटिव लेआउट यूज किए. रिलेटिव लेआउट के अंदर ज्यादा आसानी से ठीक से अगर डिजाइन करने के लिए हम ये चीज रिलेटिव लेआउट मींस इनर लेआउट विद इन द लिनियर लेआउट, हम एक इनर लेआउट यूज किए जो कि रिलेटिव लेआउट. दिस इज जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर डिजाइन. आप कैसे क्या डिजाइन करना चाहते हैं, आप वर्चुअलाइज कर लीजिए या आप पेंट या draw.io या कोई भी सॉफ्टवेयर में विजुअलाइज कर लीजिए, फिर उसको पोर्ट्रे कीजिए. सो इट्स टोटली अप टू यू. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लिनियर यूज कर रहे तो यू हैव टू यूज लिनियर लेआउट ओनली. आपको अगर रिलेटिव से ज्यादा आसानी से या कंस्ट्रेंट लेआउट से ज्यादा इजीनेस फील हो रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट.
रिलेटिव वो मतलब क्या, मतलब एक कंपोनेंट के का दूसरे कंपोनेंट के बीच में रिलेशन, यही। हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ। और कांस्टेंट में यदि किसी लीनियर कंपोनेंट मतलब के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो कांस्टेंट में आ जाएगा। नॉट एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्शन, वो कंस्ट्रेंट लेआउट मीन्स वो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो भी हम लोग व्यूज या व्यू ग्रुप डालेंगे, वो हर एक व्यू ग्रुप को प्रॉपर पोजीशनिंग देने के लिए उस व्यू ग्रुप के अंदर कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है कि तुम इधर से इधर तक, ऊपर से नीचे ऐसे रहोगे, लेफ्ट टू राइट ऐसे रहोगे। उसीलिए वायरिंग सिस्टम से किया जाता है। फर्स्ट इनिशियल क्लासेस में हम कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद उतना हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज नहीं किए, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट में वो वायरिंग जो होते हैं उसको करने के बाद या बहुत सारे डिफिकल्टीज आ जाते हैं, जैसे इफ आई वांट टू डिजाइन समथिंग लाइक दिस, तो इसमें कंस्ट्रेंट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रेफरेबल क्या है, आप दूसरा लेआउट यूज कर लीजिए जो इजीली आपको एट्रीब्यूट दे देगा, जिस एट्रीब्यूट को जस्ट यूज करके आप प्रॉपर पोजिशनिंग उसका फिक्स कर सकते हैं। सो दिस द वे एक्चुअली we design in the XML file. मैम एक और था क्वेश्चन, हम लोग जो लैम्डा मतलब जो लैम्डा जो लगाते हैं एनोनिमस क्लास, है ना, Lambda तो expression. हाँ, तो वो कौन सा ऐसा इवेंट या एक्टिविटी होता है जिसमें उसे लगाना होता है लैम्डा एक्सप्रेशन? बेसिकली अच्छा हम जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा जैसे व्यू है, कोई भी व्यू है, उसमें आपको ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, मतलब कुछ क्लिकिंग इवेंट लगाना है। अब वो क्लिकिंग इवेंट जो लगाने हैं, वो इवेंट को मैनेज करने के लिए हम लोग के पास एक मतलब एंड्रॉइड एक्चुअली एक इंटरफेस बना चुका है। उस इंटरफेस में एक्चुअली ऑन क्लिक मेथड डिफाइन किया हुआ है, मींस उसका प्रोटोटाइप डिफाइन किया हुआ है। जिस प्रोटोटाइप को हम लोग इधर यूज करेंगे तो तब वो फायर होगा, जिसके थ्रू हम क्लिकिंग इवेंट जनरेट कर सकते हैं ना। उसके लिए नेटिव प्रोसेस जो है कि एनोनिमस क्लास है या नहीं तो मींस इंटरफेस यूज करने का बहुत सारा तरीका होता है। सो वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज टू यूज द एनोनिमस फॉर्म। सो ये एनोनिमस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब लेटेस्ट वर्जन्स में क्या होते हैं, जब से लैम्डा एक्सप्रेशन तरीका है, तो लोग बोल मींस दे प्रेफर, मींस एंड्रॉइड स्टूडियो प्रेफर, अगर तुम ऐसा करना चाहो, इफ यू वांट टू डिफाइन इन एनोनिमस क्लास फॉर्म यू कैन डू इट, और अदरवाइज और इसको शॉर्टन करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन कर सकते हैं। दैट्स इट, और कोई बात नहीं। यदि इवेंट यदि कुछ होता है तो वहाँ पे हम लोग ये सब लगाना होता है। हाँ मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन वैसे ही, लैम्डा एक्सप्रेशन जो मेथड, लैम्डा मेथड जो है वो जस्ट मेथड को शॉर्टन करने के लिए, कि इतना सारा मेथड का वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट ब्रैकेट देकर, सिंस इट्स इनपुट टाइप, इट एक्सेप्ट्स ए इनपुट, दैट्स व्हाई क्या करते हैं वी, ऐसा वी लिखकर अगर हम डिलीट करें इसको, लैम्डा एक्सप्रेशन से डिफाइन करना चाहते हैं, वी लिखेंगे, वी के बाद लैम्डा फॉर्म को डिफाइन करने के लिए एरो देंगे, दिस इज लैम्डा फॉर्म। नाउ सिंगल स्टेटमेंट रहेगा तो आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट रहा तो यू नीड टू यूज द कर्ली ब्रेसेस। दिस इज द फॉर्म ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। कह सकते कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। नहीं नहीं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट करने के लिए नहीं, लैम्डा एक्सप्रेशन आपको वो ऑन क्लिक मेथड को यूज करने के लिए, जहाँ पे वो क्लिक होगा ऑन क्लिक जो मेथड है, हम्म, इधर तो स्क्रीन आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए हम इसका अंदर क्या फंक्शनलिटी लिखे है। आप सोचिए ये जो बटन था या कुछ भी था उसके ऊपर आप क्लिकिंग इवेंट लगाना चाहते हैं।
सो जैसे स्विंग, अगर हम स्विंग से कंट्रास्ट करेंगे तो उसमें था ना क्या नाम था, इवेंट लिसनर, सेट ऑन इवेंट लिसनर, ऐसा कुछ। हाँ वो है। हाँ, तो स्विंग, तो वो क्या करते हैं, वो इवेंट को हैंडल करने के लिए लगाते हैं वो मेथड। वो एक एक्चुअली एक इंटरफेस लेते हैं, उसका पैरामीटर में क्या पास करते हैं हम लोग, एक इंटरफेस पास करते हैं, जिस इंटरफेस के अंदर इवेंट लिसनर का जो मेथड है वो डिफाइन किया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोड जावा एकदम से। तो वाई कंसेप्ट इधर यूज किया गया है कि अगर हमको कोई क्लिकिंग इवेंट जनरेट करना है किसी भी व्यू में, तो वो ऑन क्लिक मेथड को यूज करना है। नाउ ऑन क्लिक मेथड कहाँ डिफाइन किया हुआ है, ऑन क्लिक मेथड एक इंटरफेस में डिफाइन किया हुआ है जो कि है ऑन क्लिक लिसनर। अब ये ऑन क्लिक लिसनर जो इंटरफेस है, इसका पेरेंट इंटरफेस है व्यू, जो हर एक व्यू को कंट्रोल कर रहा है। सो इसीलिए व्यू, जब भी हम लोग व्यू के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, मींस ऑन क्लिकिंग इवेंट लगाना चाहेंगे, तो इसीलिए व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर जो मेथड है, आई मीन जो एनोनिमस क्लास है, उस क्लास को डिफाइन करके हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं ऑन क्लिक मेथड, ताकि उस मेथड के अंदर हम लोग का जो लॉजिक लिखना चाहे वो लॉजिक, मींस मेथड को बेसिकली इधर डिफाइन कर रहे हैं। मेथड को अगर डिफाइन करना चाहते हैं आप, ये फॉर्म, ये मींस नेटिव तरीका यूज कर सकते हैं, या अगर आपको शॉर्टन करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। आपको अगर कंफ्यूजन लगता है लैम्डा एक्सप्रेशन, सो यू कैन जस्ट go for the native rule, that is creating the anonymous class. इसमें कोई आपको एरर नहीं मिलेगा कि आप हाँ क्यों लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं यूज कर रहे तो एरर मिल गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही यूज करो। So any other have any more questions till now, whatever been shown? Any more questions regarding that? So I guess you don't have any more questions. So let's let now do the code for update profile. जो बटन था फैब बटन, उस फैब बटन में सेव करना है, अपडेट करना है प्रोफाइल को। तो उसके लिए let's add फैब बटन के ऊपर फैब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर से हम ऑन क्लिक लिसनर इवेंट लगा रहे हैं। नाउ इस इवेंट को मैनेज करने के लिए हम एनोनिमस फॉर्म यूज कर रहे हैं। एनोनिमस फॉर्म इधर लिख रहे हैं अपडेट प्रोफाइल। हम कोड इधर नहीं लिखेंगे, रेदर इस मेथड के अंदर लिखेंगे। सो हम इस मेथड को इधर डिफाइन कर देते हैं। सो आई एम जस्ट कॉलिंग अ मेथड। अब एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, एवरीवन just see over here I have given the curly braces, then I have wrote the lines, but in this case I have not given the curly braces. Like if else में अगर जैसे if else या for loop जहाँ भी हो, हम लोग सिंगल लाइन रहते हैं तो कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन में वही तरीका यूज होता है। अगर सिंगल लाइन है यू कैन स्किप द कर्ली ब्रेसेस, अगर सिंगल लाइन नहीं है मैंडेटरीली यू नीड टू पुट द कर्ली ब्रेसेस टू मेंशन द कंट्रोल ऑफ द स्टेटमेंट। Am I clear why I'm not mentioning the curly braces over here? Is it clear to all? So I'm moving forward now. I'll write the line for the update profile. So अपडेट प्रोफाइल क्या क्या अपडेट कर सकते हैं हम? अपडेट कर सकते हैं जो फोटो है वो अपडेट कर सकते हैं जो इधर यूज किए हुए,
ये जो फोटो है, फोटो हम अपडेट कर सकते हैं। नाम है तो नाम अपडेट कर सकते हैं, जो नंबर अगर दिया जाए तो नंबर अपडेट कर सकते हैं, जो भी फील्ड है सारा हम अपडेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट कुछ चेंजेस करेंगे इस अकाउंट में। इसमें प्राइवेट स्ट्रिंग डीपी बोलकर एक लिखते हैं। अगेन प्राइवेट स्ट्रिंग एक फोन बोलकर लिख देते हैं या कॉन्टैक्ट। और कुछ 1 2 3 4 5 5 पैरामीटर्स आते हैं इन टोटल, सो 5 और कुछ नहीं डालना है। हम इसके अगेंस्ट में ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके गेटर सेटर्स डिफाइन कर लेंगे इन दोनों का। So I'm having my getters and my setters, इसको अरेंज कर देते हैं। So I'm ready to use it now. Now इधर where gone? अब हम पहले दिखा रहे कैसे ये टेक्सचुअल को अपडेट करेंगे, वो पहले दिखा रहे। इमेज का आप पोर्शन में आ रहे हैं बट बाद में। So how to update the textual one? So reference dot child user id dot update। अपडेट जो चिल्ड्रन है, अपडेट चिल्ड्रन से हम अपडेट कर सकते हैं ना। कौन कौन सा चिल्ड्रन को अपडेट करना है, तो उसके लिए लेट्स क्रिएट अप अ मैप ऑफ string object string map equals to new hash map dot put इधर let's use it for account। one thing, just a second। on this completion this now string so now put करेंगे। पहला वैल्यू होगा मेरा नेम। नेम ऑलरेडी शायद पुट किया हुआ है बट फिर भी हम जो भी डेटा है उसको पुट कर देंगे। एडिट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। नेक्स्ट कॉपी कर रहे, पेस्ट 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 1 2 3 4 5। ये होगा मेरा कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट विल बी ईमेल, नेक्स्ट विल बी status and the last will be DP। so DP के लिए फिलहाल हम empty रख रहे हैं या null रख रहे हैं फिलहाल के लिए। स्टेटस के लिए एडिट एक्स्ट्रा जो फील्ड है उसमें से लेंगे, ईमेल के लिए ईमेल फील्ड से लेंगे, कांटेक्ट के लिए फोन नंबर जो फील्ड था उससे लेंगे ना। फाइनली इफ एरर, अगर एरर आया, if error then if error dot
if error dot get message dot is empty, then is if error dot is empty, then error dot get message dot is empty. अगर empty है that means मेरे को ये जो डेटा है ये सही सही मिल रहा है. So what is this ref1? Ref1 is actually database reference. Is actually the database reference. So database reference dot is empty, then I'm giving a toast get context data profile updated successfully, else copy paste failed to update. That's it. So let's see ये फोन नंबर इसको रन करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं, as well as changes क्या हुआ वो भी देख लेंगे. So let's stop this code and then execute it. हम एक के बाद एक स्टेप दिखा रहे, पूरा as a whole नहीं दिखा रहे, so that people do not get confused. So profile, so आ गया. So let's put a number. I'm putting this. अच्छा, before showing it, let's see अभी मेरा रियल टाइम डेटाबेस कैसे देखने में क्या स्ट्रक्चर है एक बार दिखा देते हैं. Console files, so that you can feel the difference, you can find out the exact difference which is taking place. Okay, so see अभी फिलहाल 3 इंफॉर्मेशन है. हम इंफॉर्मेशन ये वाला फोन नंबर कुछ ज्यादा ही भरा हो गया, whatever, I'm not checking it. हम ये अपडेट करना चाहते हैं. So after writing the phone number, I'm clicking on this update option. Let's see क्या होते हैं. Crash कर गया. So okay, ये अपडेट हो गया. So as you can see ये अपडेट हो गया, but crash कर गया I think due to this null value. I think because DP तो आया नहीं है. DP no. I think due to this null value ये crash कर गया. So let's put it blank instead of null like this, and then re-execute the code. So you can understand that yes, update is taking place successfully. ये crash कर गया, that's why समझ में नहीं आया. Let's delete it once again.
so that तुम लोग को समझ में आए। ये तीन जैसे पहले से 3 था वैसे ही 3 रख रहे और कुछ नहीं रख रहे फिलहाल के लिए। Let's do it again. Profile, writing a phone number this time. Okay, और एक चीज मेरे को करना है वो num tag। Okay, saving now. Again hash dp add हुआ file। अच्छा, let's see what's the error. To check the error, I'm always using logcat. Profile.fragment get message on a null object reference. So check करते if error dot use exist, no, if error equals null, if error equals null, then I'm going to show this one, otherwise this. Let's check it out. ये blue line मतलब that is an error, so I'm checking for it. All the things has been working correctly except this one, so I delete it. So getting back over here, first of all deleting this thing again. As old 3 जैसे था वैसे ही रख रहे हैं। प्रोफाइल में जा रहे हैं, clicking on the profile, adding value, so added the value. Now clicking on save. Finally profile updated successfully और इधर दिख भी रहे। So that means this portion has been executed well. This portion is working well. Now it's the time to set the image. Now image कहाँ है अभी? अगर हम image set भी करें इधर से, so where my image is somewhere in my storage, somewhere कोई भी image, let's choose an image. Let's choose an image. So ये image कहाँ है? ये image कहाँ reside कर रहे हैं? What you people think? Where is the image residing at the moment? ये image कहाँ located है? What is the location for this image? Is my question clear to all? ये जो image दिख रहा है हर किसी को, ये image कहाँ located है? Hello, am I audible? Can you hear me? Yes. Okay. So ये image कहाँ located है? Out of your common sense, just try it out where this image has been located.
सर्वर साइड में नहीं, सर्वर में तो है ही नहीं। सर्वर में अगर होता, सो इफ आई क्लिक सम एक्स्ट्रा, फिर से वापस प्रोफाइल में क्लिक करने पर ये इमेज तो फिर से दिखाता, पर दिखा रहे क्या? सर्वर का काम तो अभी तक किए ही नहीं है। अब सर्वर साइड में करना है तो इमेज जो सेट किए थे पहले, इमेज वो में हम फोन से सेट कर रहे थे, मतलब मेरे गैलरी या मेरा कैमरा जहां से भी इमेज को हम कैप्चर करना चाहे तो वैसे इमेज कैप्चर होगा। सी इफ आई वांट टू सेव इट, सो वो इमेज का है मेरे फोन में सेव है, बट वी नीड टू सेव इट इन द सर्वर सो दैट जब हम वापस आए इस प्रोफाइल में ये इमेज रहे। अभी तो ब्लैंक है, सर्वर में होता तो ब्लैंक नहीं होता, इसमें तो लोकेशन होता ना। So now I'm going to show you how you can save a file in a server. To save a file in a server, we cannot save it directly in any database. कोई भी database में directly file को save नहीं कर सकते. So where to save a file? How to save a file? We can just provide a link, I mean the address where our file is being saved. So to store it, we require the storage option. So हम storage में click कर रहे हैं. Storage is basically the place where we can store the files. User generated files like images, audio, video, etc. without server side code can be stored and retrieved in the storage provided by Firebase. So storage में अब फाइल कैसे सेव करते वो देखेंगे, बट उसको यूज करने के लिए we have to activate our storage. So let's add the method, I mean the function library to use the storage. So storage को use करना है, so I'm using connected already है, I'm just adding the storage, accept changes ताकि library add हो जाए and मेरा project sync हो जाए. जब तक project sync हो रहा है, let's set up the thing from this side also. So I'm clicking on get started, path define किए हुए, clicking on next, storage location, next, so it's enabling the bucket. Now what is bucket? जो फोल्डर होगा, जो स्पेस हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है जहां हम लोग फाइल्स को सेव कर सकते हैं, दैट्स प्लेस, दैट पर्टिकुलर वर्क स्पेस फॉर स्टोरेज इज नोन एज बकेट. जैसे रियल टाइम डेटाबेस के लिए रेफरेंस कर रहे थे, डेटाबेस रेफरेंस यूज कर रहे थे टू एक्सैक्ट आवर प्रॉपर रेफरेंस, सिमिलरली फॉर स्टोरेज वी यूज द बकेट. नाउ this is the place where our file will be stored. अगर मैन्युअली स्टोर करने हैं तो अपलोड फाइल करके जो भी फाइल है उसको अपलोड किया जा सकते हैं. अदरवाइज we don't want to do it from here, we want to do it from our app. So let's the Gradle sync, then I'm going to show it out. I'm going to show the code. Now इसका भी हम कोड पहले से बना कर रखे. Is the helping file, so writing into storage, this is the code which will help us to write data into storage. This I'm going to share with you today. Previously I've shared the authentication, read from real-time database, write into real time database और update real time database. ये सेफ मीन्स तुम लोग से शेयर नहीं किए, ये वाला हम शेयर कर देंगे, बट इस इधर का कोड और हम जो कोड दिखाए थोड़ा डिफरेंस है. ये अपडेट का कोड थोड़ा डिफरेंस है. यू कैन फॉर एनीवन, सो कोई भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं.
So now my dependency has been added. Now I'm ready to use the storage. Now एक चीज है जहाँ bottom sheet dialog, both the cases I show bottom sheet dialog dot dismiss. जो डायलॉग मेरा ओपन किया हुआ है सो उसको डिसमिस करना है. सो इधर हम डिसमिस को कॉल करने भूल गए थे, सो दैट्स व्हाई हम इधर डिसमिस को कॉल कर दे रहे हैं. नाउ to use the storage, first of all we need to add the storage, Firebase storage over here. तो Firebase storage को ऐड करने के लिए ये लाइन ऐड कर रहे हैं. So after adding the storage, we need to get the exact reference of our Firebase storage. So I'm copying this from here itself. Copy. Initializing reference. Initializing storage. Paste. अब ये होने के बाद अच्छा एक चीज, नाउ लोड इन्फो में मेरा अभी कुछ चेंजेस करना है बिकॉज आई हैव लोड इन्फो मेथड क्या है, आई हैव मेनी अदर डेटा, मीन्स मेरे पास सब डेटा है अभी फिलहाल. सो आई विल ऐड अकाउंट डॉट सेट कॉन्टैक्ट मैप डॉट गेट contact. And now we are account dot set dp map dot get dp. Similarly over here edit phone dot set text account dot get contact edit phone हो गया edit no next will be image के लिए civ dot set image URI set image URI. अच्छा URI करना है तो let me change over here. इसको URI कर लेते हैं इधर ही URI. So here अच्छा नहीं होगा. URI set image URI नहीं यूज कर सकते, rather इमेज को सेट करने के लिए इमेज को सेट करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा. सो वो लाइब्रेरी हम बाद में दिखा रहे हैं. उसके पहले जो स्टोरेज वाला कोड लिख रहे हैं उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज सब कोई हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स लोड इन्फो अपडेट प्रोफाइल. ओके अपडेट, ये वाला अपडेट होने से पहले मेरे को
update, no, upload image. Now upload image method किससे कर रहे अलग से लिख रहे so that you don't get confused. Now upload जो करेंगे image उसको URI means file type होना चाहिए. Now image कहाँ से मिल रहा है? Let's check it out. Storage से image मेरा मिल रहा है and this is where the place is the image is getting stored. This is the URI. So एक काम करते हैं इधर एक वेरिएबल ले लेते हैं URI टाइप्स URI image URI और DP URI लिखते हैं और DP URI लिख रहे हैं सो DP URI equals to image URI but कैमरा के लिए just a second. Okay, so कैमरा के लिए flash image file same thing I can do it over here image dp URI equals to data dot get data so I'm using the URI for each and every case. Now dp URI मेरे पास आ गया है so now I can write up the code to upload image file in server that is storage. Now for that we need to write URI storage reference sref equals to storage m storage ref dot child. Now child मतलब क्या? child मतलब उसका exact means path exact path with file name means file name मतलब जिस फाइल से हम सेव करना चाहेंगे इमेज को वो फाइल नेम. So over here let me show you one thing. Over here हम एक चाहते एक फोल्डर बने उस फोल्डर के अंदर मेरा फाइल सेव हो. सो फोल्डर का नाम क्या है? लेट इट बी CIT images बोलकर फोल्डर बने. अब इस फोल्डर के अंदर मेरा फाइल रहेगा. अब फाइल का नाम क्या होगा? फाइल का नाम होगा चलो फाइल का नाम देते जो यूजर आईडी है ना वो यूजर आईडी डॉट जेपीजी या पीएनजी वैसा कुछ. सो फॉर दैट वेर कौन आ गया हाँ कॉन्कैटिनेशन करेंगे यूजर आईडी प्लस क्योंकि यूजर आईडी यूनिक होते हैं इसीलिए हम यूजर आईडी प्रेफर कर रहे हैं डॉट जेपीजी. This is the way I'm providing the exact file name over here. Concatenation करने slash देने to mention the folder and this the file name. Now जब ये हो गया then उसके बाद
क्या करेंगे, डेटा को फाइनली अपलोड द डेटा। सो डेटा को अपलोड करने के लिए sref जो पुट रेफरेंस लिए डॉट फाइल, मेरा फाइल ऑलरेडी URI में है, dp URI मेंशन कर दे रहे हैं मेरा फाइल को, डॉट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ऑन सक्सेस लिसनर या ऑन कंप्लीट लिसनर भी लगा सकते हैं। सो आई एम यूजिंग ओवर हियर ऑन सक्सेस लिसनर ओनली, जो ताकि डायरेक्टली मेरा ऐड हो जाए डेटा। सो आई एम यूजिंग so I'm using on success listener over here. Now on success listener lambda expression use कर सकते हैं या normal ऐसे जो anonymous form है that also you can use. snapshot अगर success होगा, so let me write upload the data ना लिखकर file लिखते हैं, upload the file, check for success, check for failure, अगर failure हुआ तो add on failure listener, जैसे लास्ट टाइम कल ऐड कर रहे थे वैसे ही failure listener ऐड करना है। सो ऑन failure listener सिंपल एक टोस्ट देकर दिखा देंगे, get context e.get message। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो डेटा है वो क्या अगर फेलियर हुआ तो व्हाट्स द रीजन फॉर बिहाइंड द फेलियर वो हम देख सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग ऑन डूइंग दिस वन ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर से तो हम देखेंगे कि सक्सेस हुआ कि नहीं। इफ टास्क स्नैपशॉट डॉट snapshot.get download URL नहीं आ रहे, snapshot is check snapshot command on success listener snapshot task snapshot dot get task dot is successful, अगर सक्सेसफुल हुआ तो then we will show that if it is successful then I will use the URI. So over here URI check URI image dp download link URI या URL या dp download URL लिखते हैं। तो over here or let it be string type,
So अगर successful हुआ then we can get the snapshot for it. So for this, just a second. Task completion. Task snapshot dot get task dot get result dot get result. Iterative snapshot dimension. Let's do one thing. Instead of using this, add on complete listener. Task dot is successful. Task dot get result dot just a second. I think there's some mistakes going on. Cloud storage. Look fine. This done. This much. Here success done. Success getting the data. Get download to URL. If not successful, otherwise reference reference. Reference dot get download URL. Okay. So snapshot. So task dot get result dot sref dot get download URL. Get download URL dot to string. I need to save it in download URL of DP to save it. Now, additionally, I want to do one thing. Add on progress
प्रोग्रेस लिसनर। इस प्रोग्रेस लिसनर से फायदा क्या होगा? प्रोग्रेस लिसनर से ये फायदा होगा कि हम जिसमें मीन्स कितना प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हो रहे, इमेज अपलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हम हैंडल कर पाएंगे। सो इसीलिए प्रोग्रेस लिसनर से इधर चेक करेंगे। So I'm just writing the code over here to find out the progress. So I'll check it over here at how much data has been transferred. So what is snapshot, right? Snapshot dot get byte transferred. So actually यही process है. So I'm copying the entire thing over here. Paste snapshot. Now इसको progress दिखाने के लिए we can use a progress dialog, but I don't have any progress dialog at the moment. So let's take a progress dialog. Progress dialog. Mentioned. So progress PD equals to new progress dialog. Get context PD dot show. Message uploaded, this one. Okay, so once it has been done, so I'm adding the progress. Progress. So this one, listener done, progress done, and then feature. Now once this has been done, I'm getting the URI, then only I can use it over here, right? So एक काम करते हैं, upload profile. So let's do one thing. Let's cut the code. Let's not cut the code actually. Yeah, let's cut the code from here. And just simplify करने के लिए add final update. Now let me write the code here. I'll just write dp download URL. That's it. Now here it is check करेंगे if download URL not dot is empty, not empty, then fine, then I'm going to do it. Else just I will give a toast, get context, try again later, and or can't proceed now, try again later. That's it. So I think I'm done with it. Progress dialog,
showing the progress dialog over here. As the progress dialog is being done, I like to dismiss it over here. So progress pd dot dismiss in each of the cases. Over here also pd dot dismiss. So I'm done with it. Finally, let's see whether the code is running or not. Execute the code as a whole. Let's check whether it's working or not. Then I'm showing once again. Finally I will explain as a whole once again.
Hello. Hello, ma'am. Yeah, hello. Am I audible? Hello. Hello. Yes, ma'am. हाँ हेलो मैम अभी ऑडियो ओके अच्छा अच्छा ओ मेरा म्यूट हो गया था हम ध्यान नहीं दिए थे सॉरी ओके सो download URL task semicolon task task dot get result dot string download URL goes to this semicolon done done so we dot কি বলছো এটাতে দেখা যাবে না পড়ে দেখো তো dot to string so over here now finally I think अब ये हो जाना चाहिए so अच्छा let me add a comment if upload successful can get download URL. So this is the process to get the download URL. This is the download URL or the address you can say. Now let me stop this code once again and execute it again. Final execution to check it out if it's working or not. So let's check second image. Okay. Now finally clicking on the save button, uploading. User doesn't have permission to access this object. Sure. Let's see. Oh, run account storage. Let me check the rules. Acha, read, write, all permission I want. So I'm just making allow, read and write, publish.
since they are restricting the write permission, that's why I'm getting such an error. So now let me try again on save. It's getting opened up. Okay, so once again, we execute the code. Stop. Profile, clicking on image, selecting something, saving it, uploaded, 100% profile successfully uploaded. Now let's click on something else. Let's click on home. Let's click again on profile. It is not appearing again. Let's see what's the image is there. Real-time database. URL is there. CIT app. So it is the URL. I don't think so. It's not the file. Oh, image, so I haven't saved. I guess I haven't saved the image. Oh, I hadn't set the image yet. That's why I'm not getting it. Acha, let me check it out. Let me check it out. What is the link? I think there's a mistake in the link. It's fine. Something like this, and over here also I guess it's something like this. Select image. It's okay. It's okay. The image is okay, but I haven't set the image. So let's set the image to check it out. Where gone? Image. I need to set the image over here. So to set the image, what we can do? Get bytes.
No, the rights will not go. Let's add a library over here, which is basically known as there's different library. I'm showing as Picasso library today. Picasso. So this is the library. So I'm implementing this library over here. Sync now. And the code for the library is basically documentation. Using image library, there's different kind of image libraries are there, like Picasso, like Glide. So I'm using over here currently Picasso. So it's taking time. Until and unless the download will complete, I cannot get the access of the library. That's why it's taking time. So I'm sharing the library over the chat box also, the library that I'm using, the link that I've used. Now I'm ready to use that. Picasso dot get is the method. Dot load, we need to provide the URL over here. So account dot get dp is the path. Dot into, where we need to provide into CI view is the code to write the thing. Let's execute the code as a whole and check whether it is getting saved or not. It's not a simple image that we are showing, rather it's a image which is coming from a server. Since the image is coming from a server, उसके लिए हम लोग ये पिकासो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं. पिकासो अगर यूज नहीं करना चाहते हो, सो ग्लाइड है, फ्रेस्को है, ये तीन फेमस लाइब्रेरी जो एंड्रॉइड के लिए यूज होते हैं. आई एम रिपीटिंग द नेम, पिकासो, ग्लाइड एंड फ्रेस्को, ये तीन फेमस लाइब्रेरीज हैं. So let's see directly profile में जाकर. Yes, the image is appearing. So it's coming from server. I have not chosen any image, nothing I'm doing. So update profile, ये code पूरा complete हुआ.
हम ये कोड मीन्स बहुत सारा स्टेप्स मीन्स ये कोड बहुत लेंदी एज दिख रहा है क्योंकि बहुत सारा ऑपरेशन किया गया है. हाउ टू यूज कैमरा, हाउ टू यूज गैलरी, ये सब कोड है इसमें. कैसे फेच करके डेटा प्लेस करने हैं, देन एडिट करने के बाद कैसे अपलोड होगा वो भी कोड है. तो इसीलिए ये कोड कुछ हद तक लेंदी है. तो ये कोड का जो भी रेफरेंस फाइल्स है वो रेफरेंस फाइल्स हम दे देंगे. दैट इज हाउ टू अपडेट योर रियल टाइम डेटाबेस एंड हाउ टू राइट इनटू योर स्टोरेज. सो ये दो कोड एक्चुअली हम इसमें यूज किए हुए हैं. और कैमरा एंड ऑल दोस थिंग, दिस वन आई हैव यूज्ड प्रीवियसली ओनली, सो आई एम जस्ट यूजिंग इट ओवर हियर. ये कोड और एक बार एज अ होल हम कल एक्सप्लेन करने वाले. एक्सप्लेन करने के बाद हम दूसरा कुछ दिखाएंगे कल. So with this note, let us end the class over here for the day. So thank you everyone. Let's end it over here. Again, I am saying repeatedly, do check out all the recordings, keep yourself up to date, and try to complete each and everything properly so that you can overcome the errors if any. Thank you everyone. Let's end the session over here.